हाँ, बीच के रास्ते को ब्लॉक मत करना। एक और बात, ये वायर मत हिलाना, अदरवाइज क्लास वही खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। ब्लू वाला वायर देखना कि ठीक से लगा रहे, और मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है? कोई यहाँ जो खड़ा रहेगा ना, कोई दिखेगा एडमिट कर देंगे, उसको एडमिट कर देंगे। ये आपका प्रेजेंटेशन है, मैंने शेयर कर दिया। स्टार्ट करिए इसको, इससे अगर प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से इसको, ठीक है? ठीक है, इधर का लाइट नहीं होगा। क्लास प्लीज लाइट ऑफ करो। नहीं यार, ये वाला अब स्लाइड्स इन करने वाला स्टार्ट हाँ Yes, start. Good afternoon, ma'am, and good afternoon, everyone. My name is Diksha Shah, and my team and I are going to present a PowerPoint presentation on scientific management by F.W. Taylor. So the main concept and main purpose of this presentation is to make my batchmates understand what exactly is scientific management and its objectives, definitions, and principles and techniques. So I would like to give a little introduction on the man who gave this concept about scientific management. His name was F.W. Taylor, or Frederick Winslow Taylor. He was born in 1856 and worked as a labor in a Midway Listing Company. In a short span of 6 years, he was promoted from labor to chief engineer. During his tenure, he conducted many experiments and gave many ways on training and selecting staffs for maximum output. And in 1911, he wrote a very famous book on the principles of scientific management. And he was also known as the father of scientific management. Now I would like to call Suhani to explain the next slide, please. Definition of scientific management. Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they're doing the best in the cheapest ways. This given by F.W. Taylor. Now, Taylor's scientific management, they argued it was the job of workplace and managers to develop the proper production, achieving economic goals. Now, objectives of management: to improve productivity through standardization, tool, equipments, methods, and by training workers; to minimize cost of production unit through proper planning and control; to improve the quality of output through scientific selection and training of workers. Thank you. Now for this next slide, I'd like to call Siva. sorry. Good afternoon, everyone. Here I'm Shiva, and I'm welcome to tell about some principles of the F.W. Taylor's. My first principle is rule of thumb, that the method based on the scientific management, and second is scientific train, select, and develop each worker to do the work easily, and third point is cooperate with the workers and manager equally and nicely, and fourth is divide the work nearly equally with managers and workers, so that manager can apply scientific management. Thank you, and here I come to call with Parvinder for the next slide. Good afternoon. I am here, Parvinder. So I'm going to introduce techniques given by F.W. Taylor. There are some techniques which was given by F.W. Taylor
functional foremanship. Taylor advocates separation of planning and execution function. Under factory manager, there are production in charge and planning in charge. Under production in charge, there are instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk, discipliner. Under planning in charge, there are gang boss, speed boss, repair boss, and inspector. So the next technique which was introduced by F.W. Taylor was standardized of time. It refers to the setting standards. It refers to the setting standards for every business activity. It can be raw material, product, and time. So the last slide change here. So the last technique which was introduced by F.W. Taylor was scientific study. A scientific study of time. There are 4 scientific study of time. Method study. The best way to do the best way to do the Complete that work. To do the job. Best way to complete that work. The best way to complete that work. Motion study refers to the study of movement like lifting, putting object which are undertaken while a typical job. Time study, it determines the standard time taken to perform a well-defined job. Fatigue study, a person is bound to feel tired physically and mentally if she does not take rest while working. Thank you. Diksha. D-E-E-K-S-H. Suhani and Shiva. Suhani and Shiva. Shiva. 88. 89. 65. 5. 40. और कोई है जिनका भी प्रेजेंटेशन है तो आ जाइए जल्दी। अगर आपने मुझे नहीं व्हाट्सएप किया तो भेज दीजिए, मैं यहाँ से शेयर कर दूंगी आपका भी। जस्ट वॉशअप कर दो क्योंकि अलग अलग उसमें लगाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। ओके और किसी का है क्या प्रेजेंटेशन? आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दो ना, यहाँ से कर देती हूँ। क्लास प्लीज डोंट टॉक, डोंट से सॉरी। We have limited time. We have to finish this presentation. We have to finish the revision. Everything in this particular time period. So don't waste time, right? सब तैयार रहिए एक के बाद एक। अगर मैं यहाँ से बोल रही हूँ कि मैं शेयर कर दूंगी, जस्ट मुझे व्हाट्सएप कर दो। इसके बाद भी कोई ग्रुप है कोई क्या? तो बताएंगे, जिनका भी है वो बताएंगे कि हमारा है। नंबर नहीं पता चल रहा है क्या?
आगे क्या? नहीं है। आया गया। बाकी सारे टीम मेंबर को बुला लो। मैम वो लोग पार्ट में उनको बुलाया, लास्ट में हम लोग आए क्या मैम साथ में सारे टीम बेटे कि उनको किसी साइड में ही खड़े कर दो, क्योंकि वो सब लोग फिर बीच बीच में कैसे आएंगे? आ जाएगा मैम सेकंड में। ठीक है, आ गया है। ग्रुप है आपका प्रेजेंटेशन का। क्लास sorry say sorry when you mean it. ये ना आपका ठीक है, मिनिमाइज कर सकते हैं और ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो अदरवाइज ऐसे रहने दे सकते हैं। ऐसे तो ऊपर रहेगा, ठीक है ना, और तुम अपना आगे करते हैं। ओके ठीक है। Yes. Good afternoon, ma'am, and my dear friends. We are Group 10, standing behalf of you to present our PPT on the topic Nature and Importance of Planning. In this PPT, we all are going to discuss about what is planning, secondly, its nature, third, its important, and lastly, introduction of our teammates. Introduction of our teammates. To know exactly what planning is, I would like to call one of my group member, Akash, to explain it. Good afternoon, ma'am, and all my dear friends. I am Akash Kumar. I am going to tell introduction of planning. Planning is a function of planning is the basic function of management. Thinking or deciding in advance what to do, how to do, when to do. Now as planning. Now I would call like to Abhishek. Now I would like to call Abhishek for the next part. features of planning. Good afternoon, ma'am, and all my dear CIMAGEians. Good afternoon to all of you. As you know, my name is Abhishek, and today I am going to discuss the features of planning. In the slide, these are the features we are going to discuss here. The first feature of planning is that planning focuses on achieving objective. For that feature, I am going to take one real life example. We all know, friends, first semester examination is very, very close, and many of you are going to make schedule for that. What's the reason of making schedule? To do well, to pass the paper. So basically, the main aim of doing planning is to achieve the objective of the organization.
Now second is mental activity. I am continuing that example here also. While making timetable, we get various thoughts before doing. These thoughts are how to make timetable, when to make timetable, what are the things to be included in timetable, etc. And these processes are nothing but a mental activity. Our planners mainly thinks before these activities. Now change the slide. Pervasive. Planning is applied everywhere, business, non-business, or even personal life. We have to do planning for that. Again, let's take the example of yourself. You all guys come from different area. For coming to the college, you have to do certain arrangement or planning. That's why planning is applied everywhere. Now, fourth is continuous process. The process of coming to the college regularly is considered as continuous process. So basically, planning is not a process which performed once, but it is a continuous process. It is never ending process. Well, that's all from my side. Thank you and have a nice day. Now, at last, I would like to call Vishal to discuss rest of the point. Thank you. Thank you, Abhishek. Now, another feature of planning is futuristic. As we know that planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who will do it. Who will do it? And all these questions are related to future and are to be decided while doing planning. So planning is futuristic. As for example, the day you make plans and schedule before the examination, not on the day of examination and not after the examination. So you make plan in advance. So it is a futuristic. And other features of planning is it is a primary function. Planning is primary function and it is very important. It is the base of all the function of management. Without planning, other function of management like controlling, staffing, directing will become worthless or of no use. Proceeding to our next topic, importance of planning. So here are the glance of importance. We are discussing about 4 importance. First one is planning provides direction. As one of my friend Abhishek has told that we have to firstly focus on our objective to complete our desired result, that is to do well in semester examination. And planning help us to create a path, and this path help us to achieve our goals and objective clearly. For the rest of the importance of planning, I would like to call Kunal to complete it. Thank you. Hello guys, my name is Kunal Kumar Rawat and I further continue some more importance of planning. Planning reduce overlapping. As we all know, planning is for future. And we already discussed what work should need duplication and what work should not need duplication. And also planning further help us to reduce some wastage of time and resources. Next. Planning promotes innovative idea. How planning promotes innovative idea? Because planning is all about thinking, and there is a fact that called thinking is the mother of idea. So when we do planning or think, new ideas were born. Next and the last one, reduce risk of uncertainty. Planning reduce risk of uncertainty. As I told you lots of time that future is uncertain. Nobody can detect what happened next. So, you can understand uncertainty and risks like government policy change and business environment change, natural disaster. These are the natural calamities that can cause harm to your business and organization. So the good planning can reduce these also can remove these problems from your organization. Thank you, and I like to call Vishal again to introduce our group. Yes, thank you, Kunal. At last, I would like to introduce our teammates. Akash Kumar, roll number 18, please come here. Abhishek Kumar, roll number 32. 32. Vishal Gaurav, roll number 53, myself. And lastly, Kunal Kumar Rawat, roll number 71. At last, we would like to say
We would thank you, Soni ma'am, for giving us opportunity to present our PPT in front of you. Thank you. Yes, ma'am. कहीं पे किसी ने अगर कुछ गलती की तो टीम मेंबर ने उसको संभाला, आपने देखा होगा, यही होता है टीम एफर्ट। ऐसे ही उसको हैंडल करना चाहिए कि अगर कोई कहीं अटक रहा है तो यू कैन कम फॉरवर्ड, ठीक है ना, क्योंकि आपका ये टीम का काम था, ठीक है ना, इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है ये। तो ऐसे ही होता है एक्चुअली, इसी तरह, इसीलिए हम लोग टीम में देते हैं काम को, क्योंकि इंडिविजुअल तो आपको बहुत मौका मिलेगा अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए या कुछ भी और करने के लिए, लेकिन टीम में कम मौका मिलेगा और बाद में आपको सारे काम टीम में ही करने हैं। तो हाउ विल यू कोऑपरेट विद योर टीम मेंबर्स? सब एक जैसे नहीं होते, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो यू हैव टू टेक केयर ईच एंड एवरी वन ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम, राइट? इसीलिए इसको टीम बहुत अच्छा, वेल कोऑर्डिनेटेड, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट और कौन है? मुझे दिया है क्या प्रेजेंटेशन? भेजा है, ठीक है, मैं उसको शेयर कर देती हूँ। इसलिए वो कि डिफरेंट लैपटॉप को लगाओगे, फिर वो सेटिंग बार बार चेंज करना पड़ता है, तो दैट टेक्स अगेन टाइम। अच्छा ठीक है, अभी जो आपने प्लानिंग को प्रेजेंट किया, अभिषेक, कुणाल और विशाल और आकाश, आप लोगों ने, तो अब आपको प्लानिंग में कोई डाउट है? नहीं ना? दिस हैपेंस। आप अच्छे से पढ़ भी लेंगे और पढ़ा भी देंगे, एटलीस्ट एक टॉपिक तो आपका खुद का हो जाएगा कि आप कभी भी उसमें प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, राइट? 1 घंटे पहले कोई बता देगा प्रेजेंटेशन है, चलो वही टॉपिक लेकर के, है ना? तो यही होता है, ठीक है। आई विल शेयर द नेक्स्ट स्लाइड एंड प्लीज टीम मेंबर कम फॉरवर्ड। ओके, मैंने कर दिया, आ जाइए। ठीक है ना, कहीं जॉब नहीं समझ में आया तो वर्क बोलो, कंप्लीट नहीं समझ में आया तो डू बोलो, डू नहीं समझ आया अटक मत जाओ। क्या ये डू के आगे क्या आपको मालूम हो जाएगा? Hello everyone, I am Shansi Ami. Hello everyone, I am Shansi Ami. Good afternoon, everyone. I am Trisha Singh. Hello everyone, I am Sapeta. Hello everyone, I am Ishanu. First of all, thank you Soni ma'am. First of all, thank you Soni ma'am for giving us this opportunity. We are so glad for this. Now I am going to explain the topic. Behavioral approach of management is neoclassical theory. It is socio-technical system, which means it is an approach to complex organization, work design that recognize it is socio-technical system, which means it is an approach to complex organizational work design that recognize the interaction between people and society. It refers to the interaction between society, complex infrastructure, and human relations.
The conflict and cooperation are natural and inevitable in the organization. The easy communication make better understanding and good human relation in the organization. It recommends the study of human behavior science such as psychology, sociology, anthropology for the understanding of behavioral science. Next slide. Now I would like to call Trisha for the next slide. I'm going to tell about the Hawthorne experiment. The Hawthorne experiment led to the studies of human relations in business management. The Hawthorne experiment firstly was conducted in 1924 at November 1924 Western Electric Company's plant in Chicago. This experiment was measuring about the different impact of working conditions by company itself, such as level of lighting, payment itself, dividing of work, and the output of the employees. The Hawthorne studies led to the Hawthorne studies includes 4 types of major experiment. The first one is elimination experiments. In elimination experiment, these were undertaken to find out the varying levels of elimination affected the productivity. In the first series of experiment, a group of works was chosen in a place in 2 separate groups. One group was exposed to verifying instances of elimination. Relay assembly text room experiments. Relay assembly text room experiments was designed to determine the effect of changes in various job conditions on the group of productive the elimination experiment. Bank wiring observation room experiments. This experiment was conducted to find out the impact of small groups and by the individual. In this experiment, a group of 40 male workers were formed into a small groups. Interviewing process. During the experiment, about 20,000 workers held in this experiment. In 1928 to 1930, there were many people who can work together. Initially, the interviewers were conducted by the means of the direct questioning, such as what you do to like with your supervisor, or what's your opinion. Now I would like to forward some. Hello everyone. So I'm gonna tell you about the advantages of behavioral approach. So it provides new insights to human behavior at work. It integrates different fields, basis of new management discipline called organizational behavior, and made significant contribution to management in the fields of motivation, leadership, etc. And it uses small steps to shape the behavior. And disadvantages of behavioral approach are extra emphasis on behavior which ignores more important needs. Human behavior is very complicated. We can't judge it to binary. Not easy to get change people their mind, and older people may resent being treated like a child, and it is not an universal approach. Thank you. I would like to call Ishani for conclusion. Hello everyone, I'm here to tell about behavioral theory approach conclusion. The behavioral theory of the behavioral theory of approach will tell you how to, the behavioral theory of management provides a map on how to practice effective leadership in organization. The best leaders are those who can adjust their leadership styles and use right approach in every situation. Harappa education leading self course will teach you how to embrace a new opportunity for growth and learning. The 4 steps of the leading leadership framework has 4 steps that will teach you how to navigate the different stages of learning. Thank you.
I'm 62. 27. 7. सभ्यता सोनी. I'm 26. Trisha Singh. Trisha Singh. 56 years I'll say. Wire. आ जाइए, प्रेजेंटेशन और तैयारी की जरूरत है, लेकिन फर्स्ट टाइम में ठीक है। आप लोग अभी और प्रिपरेशन चाहिए, कोई बात नहीं। क्यों होता है? तुम्हारे ये कौन है? तुम्हारे क्लासमेट है, कौन तुमको जज कर रहा है यहाँ पे? ठीक है ना? नहीं तो ठीक है, ये धीरे धीरे जितने भी क्लासेस में मौका मिले, जितने भी टीचर्स बोले प्रेजेंटेशन देने के लिए, आप देते रहिए, ठीक है ना? उससे ही खत्म होगा, राइट? दिस हेजिटेशन, ये हेजिटेशन है जो बिना मतलब का है।
ये उसी से खत्म होगा। और थोड़ा सा उसको जो भी आप जब बात कर रहे होते हैं तो कुछ बोलते हैं तो कुछ और वर्ड यूज करते हैं ना, कुछ अगर वो एग्जैक्ट वर्ड आपको नहीं यूज होता है, आप उसको वैसे पढ़िए, समझ के पढ़िए। एकदम कोई खड़ा हो गया तो अब क्या लिखा है इसके बाद नहीं समझ में आ रहा है, इतना तो पता होना चाहिए ना कि हम क्या बोल रहे हैं, राइट। बिल्कुल से डिपेंडेंसी मत रखो इन सब चीजों पे, अपने पेपर पे या अपने प्रेजेंटेशन पे। आपको मालूम होना चाहिए कि ये पॉइंट है, इसको ऐसे डील करेंगे, ठीक है। इसीलिए होते पॉइंट्स लिख के लाओ, ठीक है। जैसे तुम्हारे 4 एक्सपेरिमेंट्स थे, ऑर्थरन एक्सपेरिमेंट के रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, बैंक रूम वायरिंग एक्सपेरिमेंट, बस एक्सपेरिमेंट्स का नाम लिखो और उसको एक्सप्लेन कर दो, दैट्स इट। तुमने नाम भी नहीं लिखे थे, मैंने देखा। नहीं, ये सब जो मैं बोल रही हूँ नहीं लिखा था ना, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, बैंक वायर, ये सब नहीं लिखा था तुमने, ये तुम लिख सकते थे, उसको एक्सप्लेन खुद से कर सकते थे, राइट। क्योंकि ऐसे तो वो भी भूल तो सकते हैं ना हम। यस, व्हाट हैपेंड, आ गया। दो इसको दो, विशाल, विशाल नाम है ना। आपको ये अपने फोन पे रख लेना चाहिए था, बनाते हैं ना उसके अपने व्हाट्सएप इस पे तुम खोलोगे और अपना इस पे व्हाट्सएप पे ट्रांसफर कर लोगे, फिर आसानी से मुझे दे सकते थे, ये इजी हो जाता ना आपको। कोई बात नहीं, पहली बार हुआ है, नेक्स्ट टाइम से ऐसे करना, फोन पे रखना और वो आप मुझे शेयर कर देंगे या किसी को भी शेयर कर देंगे, या फिर पेन ड्राइव में, वो बहुत हैंडी। हाँ, यहाँ पे उसको फिर लगा दूंगी मैं। दो, इधर दो, उसको रखो रखो, वो अभी आ रहे हैं वो लोग प्रेजेंटेशन देने, ले जाइए। Just a minute. कौन सा है, मास्लोज है ना। चलिए, मैंने ये शेयर कर दिया, ऐसे करके आप, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करो, पीछे लेकर के डबल क्लिक भी करोगे तो हो जाएगा। Good afternoon, everyone. This is Rishika. Here's my group, Nandini, Nifu, and Tutu. First, I would like to thank my honorable teacher, Ms. Soni ma'am, for giving us the chance to present on the selected topic in front of you all. Today's topic of our presentation is Maslow's hierarchy of needs, or Maslow's theory of motivation. Now, I would like to tell you something about Abraham Maslow. Abraham Maslow was an American psychologist who was born on 1st of April 1908. He gave this theory during 1940s. Maslow's hierarchy of needs, or Maslow's theory of motivation, was a theory of psychological health predicting on fulfilling innate human needs on predicting on fulfilling their innate human needs in priority, culminating in self-actualization. Now, my group member Nandini will proceed further to this topic.
Good afternoon to all. My name is Nani, and now I'm going to explain about this theory. As we know, motivation is highly complex. Many researchers have studied about motivation from several dimensions and developed some theories. Maslow needs hierarchy theory is considered fundamental to understanding of motivation. Abraham Maslow, a well-known psychologist, in a classic paper published in 1943, obtained theory of motivation. His theory was based on human needs. Now Preeti will going to explain. Good afternoon, everyone. I'm Preeti. I would like to explain to you all about 5 basic human needs. According to Abraham Maslow, the first one is physiological needs, which included air, water, food, clothing. And the second is safety needs, which included emotional stability and well-being, health security, financial security. The second is third, love and belonging needs, which included friendship, trust, affection, and love. After that, there comes esteem needs, which included respect, status, freedom. One last is self-actualization needs. That means desire to become that the most one that can be. Now Nandini will proceed for the previous slides. Nishu. Hello everyone, good afternoon. I am Nishu. There is some assumption about this theory. First one is people's behavior based on their needs. Satisfaction of such needs influence their behavior. Second one is people's needs are in hierarchical order, starting from basic needs to other higher level needs. Third one is a satisfied need can no longer motivate a person only next to other higher level needs. Third one is a satisfied need can no longer. And last one is a person moves to the next higher level of the hierarchy only when the lower needs is satisfied. That's all from us. Ma'am Nandini, roll number 51. Ma'am Disika. Roll number 5. Nishu Kumar, roll number 36. Roll number 33. Nishu, roll number 36. 33.
ऑफ द डे, उसके बाद अटेंडेंस ले लूंगी, ले लिया तुमने, ठीक है। मैं अटेंडेंस नहीं देने वाली हूँ अगर आप लोगों में से कोई खड़ा नहीं हुआ तो। आपको बस खड़ा हो जाना है और बैठ जाना है और कुछ नहीं करना, और मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ, ठीक है। अगर गलती से भी हुआ तो तुम खड़े हो जाओ बस, वरना मैं उतनी दूर में किसी का भी अटेंडेंस नहीं दूंगी और सबके रोल नंबर लिख के ले जाऊंगी। ओके, अटेंडेंस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग अनम्यूटेड है ना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। कोई खड़ा नहीं हुआ? नो वन डिड दिस, ठीक है। पीछे से सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यस, यहाँ तक खड़े हो जाओ। जिन्होंने मास्क नहीं पहना वो बस बैठे रहेंगे, क्योंकि वो नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। उनको डर है, उनको डर है कि हम देखे जाएंगे। खड़े हो जाइए, और भी खड़े हो जाओ। और कौन है पीछे? जाइए आप लोग क्लास से बाहर जाइए। मुझे नहीं मतलब है, किसी ने तो किया था। अगर आप खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो ऐसे ही होगा। किसने किया था मैं ये बार बार पूछ रही हूँ, और मैं कुछ नहीं करूंगी ये भी बोल रही हूँ, उल्टा मार्क भी करूंगी उसका प्रेजेंस। बस तुम खड़े होने का गट्स रखो। जब तुम कुछ करते हो तो उसको एक्सेप्ट करने, कन्फेस करने का भी हिम्मत रखो, ठीक है ना? अगर आप एक्सेप्ट करते हैं इसका मतलब है कि शायद अगली बार से आप एक बार सोचेंगे वो करने से पहले, नहीं तो नहीं सोचेंगे, लगातार करते रहेंगे और कहीं बहुत बुरी तरह से फंसेंगे फिर, ठीक है? जिसने भी किया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके या तो खड़े हो जाए और एक्सेप्ट कर ले कि मैंने किया है। मैं सबको प्रेजेंट, सबका अटेंडेंस बना दूंगी, नहीं तो बाहर चले जाएंगे क्लास से। मैं अभी भी समझा रही हूँ, ये लास्ट है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अटेंडेंस बनाना बहुत सारे बच्चों का। जिसने भी किया, आप तीनों ने या किसी और ने, जिसने भी किया एक्सेप्ट इट, मान लो, खड़े हो जाओ और बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। क्लास प्लीज डोंट लुक टुवर्ड्स देम। क्या है मुझे नहीं मालूम, आई हैव नेवर ट्राइड इट। अभी देखेंगे। यस, मैं देखूंगी बाद में मास्क पहन के, लेकिन अभी आप लोग खुद से एक्सेप्ट करिए। जिसने भी किया है, मैं तो बोल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है किसने किया है, नहीं तो बाहर चले जाओ। चलो, मेरे पास अब टाइम नहीं है। अगर कोई, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सके, तो आप लोग कभी सुधरने का कसम नहीं खा के आए कि यू विल नॉट चेंज, नेवर इम्प्रूव। मालूम होगा, अगल बगल वाले को मालूम होगा, वो नहीं बता रहा, अगल बगल वाले को मालूम है कि किसने किया है, बट नो विल से, तो नहीं, मत बताओ, ठीक है? वो मैं बाद में बताऊंगी कल। ओके, अभी चलो 1 नहीं बना सकते अटेंडेंस, सॉरी। 2 3 4 5 6 यस मैम 6 7 मैं नहीं बनाऊंगी अटेंडेंस, मैं सच बोल रही हूँ।
8, 9, 10, Present, ma'am. 10. 11, 11 present, ma'am. 12, 13, 14. जिस किसी ने भी किया है, मैं ये नहीं बोली तुम तीनों, जिस किसी ने भी किया है खड़े होके एक्सेप्ट कर लो, बैठ जाओ, दूसरे का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो. 14, 15, Yes, ma'am. 15. 16, 17. बैठ जाइए, बाहर चले जाइए, मैं नहीं बनाऊंगी अटेंडेंस जब तक मानेंगे नहीं. 17, 18, 19. बच गए, आगे बैठे थे. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Present, ma'am. 25, 26, 27, 28, 29, 30. पहले पता करो कौन था. 31, 32, 33, 34. Present, ma'am. 35, 36, 37, Present, ma'am. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 present, ma'am. 47, 48, 49, Yes, ma'am. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, Ma'am, 57. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, Yes, 74, 74, Ma'am, 75. तुम पता करो कौन था. 76, Jet, ma'am. 76. 77, Ma'am, 76. 78. Ma'am, 76. डन, मुझे सुनाई दे रहा है. 78, 79, 80, Yes, ma'am. 81, Present, ma'am. 81. 82, 83, 84, Present. 85. Ma'am, present 84 and 85. ओके ओके. Ma'am. 86. Ma'am, 84 present, ma'am. हाँ समझ में आ गया. 84, 85 प्रेजेंट है. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. 92 present, ma'am. 93. Ma'am, 92 present. हाँ हाँ ठीक है. 93, 94, 95, 96. Yes, 90, ma'am. 96. 97, 98, 99, 100, 101. 99. कौन है 101? तुम पता करो. 102, 103, 99, ma'am. 102, 103, 104, Yes, ma'am. 104. 105, 106, 106, sorry, 107, 108, Yes, ma'am. 109, 108, Yes, 109, ma'am. 110, Yes, ma'am. 111, 112, 113, Present, ma'am. 114, 115. ठीक. Ma'am, 113. Yes, 114. 99 का मैम. Ma'am, 57. 114 है क्या? नहीं. एक एक बोलो. क्या कौन कौन सा रोल नंबर बोलोगे? Ma'am, 57. 57. जस्ट a minute. पहले 57 देख लेने दो. तुमने बोला था क्या? Yes, बना हुआ है ma'am. 57. प्लीज डोंट क्रॉस चेक. और किसी का छूट गया है क्या? 139, मैम. 76 बना हुआ है. और कौन है? Ma'am, 113. 9. 113 बना तो है. 113. मैम, 92 हो गया, ma'am. यस क्या बोले?
मैम 91 मैम 91 हाँ 91 मैम डाल। 92 अरे मारूंगी मैं तुम्हें हरप्रीत, हो तो गया है 92। 99 मैम 99 मैम हाँ हो गया, 99 बना दिया मैंने श्रेया। और कोई? ठीक है, थैंक यू क्लास। मैम 73 मैम 73 में एक बार देखिए।